A very important part, that is nothing but the protein binding of drug. After the absorption of drug from the site of administration, a drug will move into the central compartment, that is nothing but the blood. And now in the blood, drug may be either in a free form or either in a, what do you mean by protein binding of drug? After the absorption of drug from the site of administration, it will move into the blood. Now in the blood, your drug may be either in a free form or it may bound to the plasma proteins. आपके ब्लड में क्या है कि ब्लड सेल से प्लाज्मा प्रोटीन से अभी जो ड्रग आपका एब्सॉर्प्शन होने के बाद में जो ब्लड में आ चुका है वो अभी वहां पे फ्री फॉर्म में भी रह सकता है, मतलब एज इट इज ड्रग का जो सॉल्ट रहेगा वो ड्रग रहेगा फ्री ड्रग, और इट में भी आइदर इन अ फॉर्म ऑफ बाउंड, ये बाउंड बाइंड भी कर सकता है। किसको बाइंड करेगा? जो भी प्लाज्मा प्रोटीन है आपके, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, hemoglobin, etc. There are a lot of plasma proteins. The the phenomenon of complex formation of protein, the phenomenon of complex formation of protein, phenomenon of complex formation of drug with the protein. Now this complex formation is most of the time reversible. ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वो रिवर्सिबल होता है. सो रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फिनोमेनन of drug with the plasma protein, and that is known as a protein binding of drug. Okay, so phenomenon of complex formation of drug with the plasma proteins, that is known as a protein binding of drug. Now this phenomenon is very important because protein binding of drug will alter the pharmacokinetics of the drugs, and that's why you need to understand the protein binding of drug. So normally drug used to bind to a protein in a reversible manner. So reversible most of the time this binding is a reversible. Okay, now drug may bind to a different plasma protein. There are different plasma proteins which are available in your body or which are available in your plasma to whom these drugs can bind. So again that depends on the physicochemical properties of drug. Suppose your drug is highly acidic in nature, so it will bind to albumin. If drug is highly basic to nature, so जो extreme acidic या basic drug होते हैं या फिर जो ionic drug होते हैं, so most of these drug they used to bind to plasma. Now this reversible complex formation of a drug with the plasma protein, that is known as a protein binding of drug, and you have to study this because protein binding of drug can alter the pharmacokinetics as well as pharmacodynamics. because अगर वो प्रोटीन को बाउंड करता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अगर वो प्रोटीन को बाउंड करता है ड्रग तो वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, अगर वही ड्रग प्रोटीन को बाउंड है तो वो इलिमिनेट नहीं होगा. सो ऑब्वियसली उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा. नाउ अगेन इफ सो ड्रग इज फ्री, that is easily available for a action for metabolism, for distribution and elimination. But bound protein bound drug is not available for distribution, not available for metabolism and not for elimination. Only free form of drug is distributed in the body, only free form of drug is metabolized in the body, only free form of drug is eliminated from the body. ठीक है, so you have to remember कि अगर ड्रग प्रोटीन को बाउंड करता है तो वो मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता. इंट्रासेलुलर बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स also known as a also known as primary receptor, and extracellular binding of drug known as secondary receptor or silent receptor. So this line is not much important for you because ये protein binding में नहीं आता है. Now types of binding. So there are two types of binding of drug with the protein. So drug most of the time it is reversible binding. Types of protein binding. So first one is the reversible. So your drug may bind to a protein in a reversible manner. अगर आपका ड्रग रिवर्सिबल बाइंड करता है प्रोटीन को तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होने वाली. सो मोस्ट कॉमन एंड जनरली it is a reversible type of binding. Okay, it is the most common type of binding of drug with the protein, that is a reversible binding of drug with the protein, and they involve the following type of interaction. So what type of interaction that will be there in a drug and प्रोटीन और ड्रग के बीच में कौन से बॉन्ड होंगे रिवर्सिबल में, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. सो इन द रिवर्सिबल बॉन्डिंग ए ड्रग में बाइंड टू ए प्रोटीन थ्रू ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ए ड्रग में बाइंड टू ए प्रोटीन थ्रू ए हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स राइट, और ए ड्रग में बाइंड टू ए प्रोटीन वाया आयनिक बॉन्ड्स और आयनिक इंटरेक्शन, और इट में बी आइदर वैन डर वाल in the reversible type of binding of drug with the protein. So these type of bonds are there, right? So you have to remember hydrogen bond, right, ionic bond or interaction, then hydrophobic interaction and van der Waals forces.
सो अगर रिवर्सिबल बाइंडिंग होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्रग का प्रोटीन के साथ बाइंडिंग होता है वो रिवर्सिबल ही होता है। एंड उसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है उसमें, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकते हैं उसमें, आयनिक बॉन्ड हो सकता है उसमें, और आयनिक इंटरेक्शन हो सकते हैं, और वैंडरवाल फोर्स हो सकते हैं। सो क्वेश्चन आ सकता है रिवर्सिबल में ये बॉन्ड्स। नाउ इरिवर्सिबल टाइप ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, सो इट इज अ वेरी रेयर फिनोमेनॉन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं होता है इरिवर्सिबल बाइंड, कुछ कुछ ड्रग में होता है इरिवर्सिबली बाइंड करता है। सो इन द इरिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ ड्रग विद द प्रोटीन or irreversible binding of protein, so that involves the covalent bond। क्वेश्चन इसके ऊपर आया, इन द प्रोटीन बाइंडिंग, इन द रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग of a drug which bond is not involved। so in the reversible binding of protein, which bond are involved? Hydrogen bonds are involved, then hydrophobic interaction are there, ionic interaction are there, and van der Waals forces। so covalent bond is there in a irreversible। अगर ड्रग आपके प्रोटीन के साथ में कोवेलेंटली बाइंड होता है तो उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल टाइप ऑफ बाइंडिंग, राइट। सो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग और देयर आर टू टाइप ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग विद द प्रोटीन, so reversible binding and irreversible binding। so what are the examples of irreversible binding? so covalent binding of chloroform and paracetamol to the hepatic cell or hepatocyte। तो जो लीवर के सेल होते हैं उसको ये पैरासिटामोल क्लोरोफॉर्म जो है इरिवर्सिबली बाइंड करता है। दैट्स व्हाई these two drugs has a adverse effect known as a hepatotoxicity। अगर कोई ड्रग है जो लीवर को ज्यादा बाइंड करता है तो उसको क्या होगा, हिपेटोटॉक्सिसिटी होगा। ओके, सो एग्जांपल इज देयर पैरासिटामोल एंड this chloroform। there are other drugs also। remember in the reversible type of protein binding of drug, hydrogen bonds are there, ionic interaction are there, hydrophobic bonds are there, van der Waals forces are there। in the irreversible type of bonding, covalent bonds are there। most common is a reversible type of bonding, irreversible type of bonding is a very rare। you know that those drug which binds to those drug which binds to plasma proteins, those drug which mostly bind to plasma protein, so they less bind to extracellular tissue। जो ड्रग ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड करता है तो वो बाकी टिश्यूज को बाइंड नहीं करेगा, जैसे लिवर, किडनी है ना, लंग्स, या फिर आपका स्किन, बोन्स। so those drug which binds to selectively to a plasma protein, they will less bound to extracellular tissue or blood compartment। for example warfarin is a 99% bind to the albumin। warfarin नाम का एक ड्रग है, it is a anticoagulant। we have already seen about the anticoagulant। so warfarin 99% binds to a plasma protein, it has a very less it has a very less volume of distribution, it has a less apparent volume of distribution than true volume of distribution। तो जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करता है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ है ना बॉडी में। वो कहाँ पे है, आपके ब्लड में है, और ब्लड का है, ब्लड मतलब क्या, सेंट्रल कंपार्टमेंट। सो ब्लड में ही है तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं उसका। अगर वो ड्रग आपकी किडनी में जाता है, अगर वो ड्रग स्किन में आता है, ब्रेन में जाता है, so that is known as distribution। and those drugs which binds to extra cellular tissue, जो बाकी के टिश्यू है जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गया, रेटिना, हेयर्स, स्किन, नेल्स, जो भी, so those drug which binds to extra cellular tissue, they less bind to the plasma protein। अगर कोई ड्रग ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू को बाइंड करता है तो वो प्लाज्मा प्रोटीन को बहुत कम बाइंड करता है। ओके, सपोज सम ड्रग बाइंड्स टू ए liver, so it will very less bind to a plasma protein, right? and that kind of drug has a very high volume of distribution। so their volume of distribution, apparent volume of distribution is okay, has a large apparent volume of distribution than true volume of distribution। example of drug chloroquine। अभी ये chloroquine जो है, it is a drug used in the malaria, it has a very high volume of distribution, it binds to a various tissues like आपके ये रेटिना जो होता है आपका आईज का रेटिना, उसको bind करता है। and there is one adverse effect of this chloroquine, that is a retinopathy, because it binds to a retina। now what are the different plasma proteins which are there in a plasma to which a drug may bind? ऐसे कितने प्रोटीन है आपके प्लाज्मा में कि जिसके साथ में ड्रग का बाइंडिंग हो सकता है, प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। तो डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स अवेलेबल फॉर अ बाइंडिंग ऑफ वेरियस ड्रग्स। कितने प्लाज्मा प्रोटीन्स है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, बट अगेन आई हैव टू रिवाइज इट बिकॉज व्हेन वी वाज डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड at that time also I think I have so protein, first protein is nothing but the albumin। पहला प्रोटीन कौन है, ह्यूमन सीरम albumin। ओके, रिमेंबर क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, if you don't know write down 99% drug binds to albumin। so most of the drug
binds to albumin, or most common site of drug binding to a protein is nothing but the albumin. Albumin is the most commonly protein to which drugs used to bind. So 99% drug binds to, or 99% drug binds to albumin. क्वेश्चन एक आ चुका है इसके ऊपर. So 99% drug binds to albumin. Remember, what is the molecular weight of albumin? Molecular weight of albumin is a 65,000 to 68,000 delta. 65,000 से लेके 68,000 तक डेल्टा उसका molecular weight होता है. This was question in GPAT 2021. What is the molecular weight of albumin? इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है GPAT 21 में. So molecular weight कितना होता है? 65,000 delta to 68,000 delta. Now, okay, so it is found in the serum in a concentration of 3.5 to 5 gram per set. इतना ही concentration होता है plasma में. Now, which kind of drug binds to albumin? Large variety of drugs they used to bind to albumin. All type of drug they binds to albumin. That's why 99% drugs binds to albumin. ये आप याद रखो इसको. 99% drug binds to albumin. Now, second protein in the plasma which is available for binding of a drug. ठीक है, पहले तो मोस्टली जो 99% ड्रग है वो तो अल्बुमिन को ही बाइंड करते हैं, और ये जो अल्बुमिन होता है इसके ऊपर भी डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स होते हैं, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. सेकंड प्रोटीन इज नथिंग बट द एसिड 1. ओके, सेकंड प्रोटीन इज अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन. सेकंड प्रोटीन इन द प्लाज्मा इज एसिड 1 अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन. सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 44,000 डेल्टन्स एंड इट इज फाउंड इन द वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन 0.04 to 0.1 ग्राम परसेंटेज. मोस्टली बेसिक ड्रग्स, जो बेसिक ड्रग्स होते हैं लाइक इमेप्रामाइन, देन लिडोकेन, क्विनेडिन. तो इमेप्रामाइन इज नथिंग बट द एंटी डिप्रेसेंट, लिडोकेन इज अ लोकल एनेस्थेटिक, इट इज अ क्विनेडिन इज अ एंटी मलेरियल एज वेल एज एंटी आर्गनिक. सो मोस्टली बेसिक ड्रग जो होता है वो एसिड ग्लाइकोप्रोटीन को बाइंड करता है. तो आप क्वेश्चन आ सकता है, सो बेसिक ड्रग बाइंड्स टू विच प्रोटीन इन द प्लाज्मा. तो यहाँ पे देखो बेसिक आ गया, यहाँ पे टर्म क्या आ गया? बेसिक. कौन से ड्रग? बेसिक. और यहाँ पे प्रोटीन कौन सा है? एसिड ग्लाइकोप्रोटीन. तो एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है तो बेस किसको बाइंड करेगा? एसिड को ही बाइंड करेगा. सो ऑब्वियसली, सो alpha 1 acid glycoprotein is a binding site for basic drug like imipramine, lidocaine and quinidine. Now next protein available in the plasma to bind to a drug. So next protein is nothing but the lipoprotein. So lipoprotein is nothing but the, we have seen this macromolecular complexes of lipid with the proteins. तो इसमें बहुत सारे आता है. लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड उसके बाद में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. सो हर एक का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है. सो कॉमनली कितना होता है? सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपोप्रोटीन्स आर रेंजिंग फ्रॉम दिस 20 lakhs to 34 lakhs डेल्टन. नाउ लिपिड सोल्युबल ड्रग्स ओनली दे यूज्ड टू बाइंड टू. तो लिपोप्रोटीन है तो लिपिड रहेगा, तो ऑब्वियसली इसमें क्या कौन से ड्रग बाइंड करेंगे? लिपोफिलिक एंड बेसिक ड्रग दे यूज्ड टू बाइंड टू ए लिपोप्रोटीन. नाउ नेक्स्ट वन इज alpha 1 globulin. It has a molecular weight of 59,000 delton, right? So which kind of drug binds to this, to alpha 1 globulin? To steroidal drug, जो steroid होते हैं जैसे cortisone, hydrocortisone, prednisolone, etc. Then thyroxine and cyanocobalamin. So these kind of drug they used to bind to alpha 1 globulin. Now next protein is alpha 2 globulin. So molecular weight होता है उसका 1,34,000 delton. So which kind of drug binds? So फैट सोल्यूबल विटामिन, लिपिड सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं ए डी ई के. यहाँ पे आपको याद रखना है कि लिपिड सोल्यूबल विटामिन कौन से. व्हेन वी विल सी द विटामिन इन द बायोकेमिस्ट्री एट द टाइम आई विल एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड ऑल दैट. नाउ जस्ट रिमेंबर फैट सोल्यूबल विटामिन्स दे बाइंड्स टू अल्फा 2 ग्लोबुलिन. इसको सिनोनिम क्या है वो अपन नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे. उसको क्यों बोलते हैं? ट्रांसकोटिन, बिकॉज उसमें लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स बाइंड करते हैं. देन क्यूप्रिकाइन आल्सो बाइंड्स टू दिस अल्फा 2 ग्लोबुलिन. देखो यहाँ पे अल्फा 2 ग्लोबुलिन को लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स और फैट सोल्यूबल विटामिन्स बाइंड करते हैं एंड क्यूप्रिकाइन बाइंड. नाउ नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन. इट हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 64.5,000 डेल्टन. सो इसको कौन ड्रग बाइंड करता है? देखो फिनिटोइन, फिनोबार्बिटॉन और फिनोबार्बिटॉल एंड देन फिनोथाइजिन. अभी ये जो ड्रग्स है, सो दिस ड्रग बाइंड्स टू
hemoglobin, phenytoin, phenobarbital, and phenothiazines, right? These drugs will have adverse effect, that is known as a hemolysis or anemia. These drugs will have adverse effect of anemia because ये drug bind करते हैं hemoglobin को और उसका उसका break down करते हैं, and that's why hemolysis. So that is the adverse effect. So this is the chart which is very important. Okay, most of the drug binds to albumin 99%. Okay, basic drug binds to acid 1 glycoprotein, alpha 1 acid glycoprotein. Okay, लिपोप्रोटीन को लिपिड सोल्यूबल ड्रग और लिपोफिलिक ड्रग बाइंड करेंगे। अल्फा 1 ग्लोबुलिन को स्टेरॉइड बाइंड करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग बोलते हैं। अल्फा 2 ग्लोबुलिन को लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स बोलेंगे और इसको कैरोटिनॉइड बाइंडिंग साइट बोलते हैं इसको। जिसको लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स बाइंड करते हैं जैसे अल्फा 2 ग्लोबुलिन, उसको अपन बोलेंगे कैरोटिनॉइड बाइंडिंग साइट और इसको बोलेंगे ट्रांसकोर्टिन बाइंडिंग साइट। अल्फा 1 ग्लोबुलिन जो है वो ट्रांसकोर्टिन बाइंडिंग साइट एंड हीमोग्लोबिन को ये ड्रग बाइंड करते हैं। नाउ विल सी द नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंट ड्रग्स और डिफरेंट ड्रग बाइंडिंग साइट ऑन अल्बुमिन। अल्बुमिन जो प्रोटीन है उसके ऊपर कितने बाइंडिंग साइट है, इसके ऊपर कम से कम 3 बार क्वेश्चन आया। ओके, सो डिफरेंट साइट्स ऑन अल्बुमिन फॉर ए बाइंडिंग ऑफ ए ड्रग और डिफरेंट ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग साइट। ठीक है, अल्बुमिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन इन द प्लाज्मा टू विच मोस्ट ऑफ द ड्रग बाइंड्स। तो अल्बुमिन को बहुत सारे ड्रग्स 99% ड्रग बाइंड करते हैं, तो एक ही जगह पे थोड़ी ही बाइंड करेंगे वो सब। तो हर एक का एक सीक्वेंस होता है, मतलब पर्टिकुलर अमीनो एसिड सीक्वेंस के ऊपर बाइंड करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट such sequences has been identified and they are named, right? So first site is known as a site 1. Site 1 is known as a warfarin binding site. Site 1 is known as a warfarin binding site or azapropazone binding site. Site 1 जो है अल्बुमिन का उसको क्या बोलेंगे, warfarin binding site और azapropazone binding site. And as it is question उसके ऊपर आ चुका है 2 बार। Site 1 is nothing but the warfarin binding site and और azopropazone binding site. Now ये साइट के ऊपर बहुत सारे ड्रग्स बाइंड करते हैं। So site 1 is known as a warfarin binding site and azopropazone binding site to which other drugs also bind. So it represents the region where a large number of drug binds. So several NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. All NSAIDs or several NSAIDs they used to bind to site 1. For example, phenylbutazone, naproxen, indomethacin. So these drugs they binds to site 1. So due to this, there is a more affinity to this phenylbutazone. Phenylbutazone has a more affinity at the site 1 than this warfarin. So if warfarin and phenylbutazone are given together, so they result in the drug displacement interaction or drug distribution interaction. So I will explain that one later. Now again sulfonamides also binds to this site like sulfa dimethoxine, sulfamethizole. Then phenytoin also binds, bilirubin, सोडियम वैल्पोरेट, these are the drugs. ये दोनों है एंटी इपिलेप्टिक। और बिलिरुबिन क्या है, इट इज नथिंग बट द बाइल एसिड में होता है। साइट 1 इज नोन एज द वारफेरिन बाइंडिंग साइट और azapropazone बाइंडिंग साइट टू व्हिच NSAIDs binds, sulfur drugs also binds and anti epileptic drugs. Now second site of albumin is known as a diazepam binding site. Second binding site on albumin, पहला साइट जो होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वारफेरिन बाइंडिंग साइट और azapropazone बाइंडिंग साइट। सो वारफेरिन बाइंडिंग साइट और azapropazone बाइंडिंग साइट। सो साइट सेकंड ऑन अल्बुमिन, साइट सेकंड मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड सीक्वेंस रहेगा जिसके ऊपर ये ड्रग बाइंड करेगी। सो साइट सेकंड इज नोन एज अ डायजेपम बाइंडिंग साइट। Diazepam binding site. So as it is question of site 1 is known as albumin binding site, 1 is known as warfarin binding site or azapropazone binding site. Site second is known as diazepam binding site to which other drugs also bind. For example, ketoprofen, ibuprofen, tryptophan, cloxacillin, probenecid and medium chain fatty acids. They also binds. तो साइट सेकंड जो है उसको बोलेंगे डायजेपम बाइंडिंग साइट, उसके ऊपर बाकी ड्रग भी बाइंड करते हैं। जैसे if you use diazepam along with this drug if you use diazepam along with this drug, then there is a drug interaction, displacement type of distribution interaction, right? Now site 3 is known as a site 3 is known as a digoxin binding site, इसको digoxin bind करता है, right? Site 4 is known as a tamoxifen binding site, tamoxifen. Well, so I will quickly revise it.
फिर से एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ. Site 1 is known as a warfarin binding site or azapropisin binding site. Site 2 is known as a diazepam binding site. Site 3 is known as a digoxin binding site. Site 4 is known as a tamoxifen binding site. Okay, so you have to remember these 4 sites. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए. क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है आपको कि एल्बुमिन बाइंडिंग साइट 3 इज, और नीचे ऑप्शन में आएगा आपको वारफेरिन, डायजेपाम, टैमोक्सिफेन, डिगोक्सिन. ठीक है, ऐसा. ठीक है, सो रिमेंबर साइट 3 डिगोक्सिन, साइट 1 warfarin binding site or azapropisin binding site, site 2 diazepam binding site, site 3 digoxin binding site, site 4 tamoxifen binding site. Right now एक तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ सकता है या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, they will ask you match the following site on a albumin with respect to drug binding to. तो एक कॉलम में देंगे आपको साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4. दूसरे कॉलम में ये ड्रग देंगे आपको, वो डायजेपाम, टैमोक्सिफेन, डिगोक्सिन, वारफेरिन. So you have to find the correct match. Okay, so उसके टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं. Now ये तो हो गया albumin. So albumin has a four side binding site, right? Now globulin. So binding site for globulins. First is nothing but the alpha globulin. One A, alpha 1 globulin. So it is also known as a transcortin. Alpha 1 globulin is also known as a transcortin. Question as it is इसके ऊपर आ चुका है. ठीक है, ऊपर देखो. So alpha 1 globulin is known as a transcortin, right? Alpha 1 globulin is known as a transcortin. Why it is known as a transcortin? Because it is a binding site for corticosteroids. जो corticosteroids होते हैं, जो steroidal drug होते हैं, जैसे ये हो गया cortisone, hydrocortisone, triamcinolone, उसके बाद में dexamethasone, betamethasone. So all these are the corticosteroidal drug, corticosteroids, and they binds to alpha 1 globulin, and that's why alpha 1 globulin is known as a ट्रांसकोटिन. क्वेश्चन एज इट इज आ चुका है. ट्रांसकोटिन क्या है? अल्फा 1. अल्फा 2 ग्लोबुलिन. अल्फा 2 ग्लोबुलिन इज नोन एज सेरुलोप्लाज्मिन. अल्फा 2 ग्लोबुलिन को क्या बोलेंगे? सेरुलोप्लाज्मिन. अल्फा 2 ग्लोबुलिन इज नोन एज सेरुलोप्लाज्मिन एंड इट इज अ बाइंडिंग साइट फॉर लिपिड soluble vitamins A, D, E and K. So ceruloplasmin it also site for binding of cupric ion. तो cupric ion भी इसको बाइंड करते हैं अल्फा 2 ग्लोबुलिन को. लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स भी उसको ही बाइंड करते हैं एंड इट इज नोन एज अ सेरुलोप्लाज्मिन. तो इसका सिनोनिम जो है इंपॉर्टेंट है. अल्फा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 1 ग्लोबुलिन इज नोन एज अ ट्रांसकोटिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन इज नोन एज सेरुलोप्लाज्मिन. यू हैव टू रिमेंबर. नाउ बीटा 1 ग्लोबुलिन इज नोन एज अ ट्रांसपेरिन. बीटा 1 ग्लोबुलिन जो होता है, ग्लोबुलिन में टाइप है ना, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन. तो ग्लोबुलिन में, ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन वेयर यू विल हैव डिफरेंट टाइप. जैसे इसमें होगा अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइप होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा. ओके, सो अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा 1 ग्लोबुलिन इज देयर नोन एज ट्रांसपोर्टिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन सेरुलोप्लाज्मिन एंड अल्फा. ओके, नाउ बीटा 1 ग्लोबुलिन, बीटा 1 ग्लोबुलिन इज नोन एज अ ट्रांसफेरिन. बीटा 1 ग्लोबुलिन को क्या बोलते हैं? ट्रांसफेरिन. अभी देखो ट्रांसफेरिन, फेरिन मतलब क्या है? यहाँ पे फेरस आएगा. सो इट इज अ बाइंडिंग साइट फॉर फेरस आयन, बाइंडिंग साइट फॉर फेरस आयन. सो अल्फा 1 is a binding site for corticosteroids, that is known as a transcortin. Alpha 2 known as a ceruloplasmin, binding site for vitamins, fat soluble vitamins and cupric ion. Beta 1 globulin is known as a transferrin and binding site for ferrous ion. Okay, now next we'll see. Beta 2 globulin is binding site for carotenoids. जो beta 2 globulin होता है वो that is a binding site for carotenoids. carotenoids मतलब क्या है? carotenoids मतलब क्या है? यहाँ पे बीटा कैरोटीन रहेगा, बीटा कैरोटीन और प्रो विटामिन ए. रिमेंबर बीटा कैरोटीन इज आल्सो नोन एज अ प्रो विटामिन ए बिकॉज one molecule of beta carotene after cleavage, after metabolism, or it will give you 2 molecules of vitamin A or retinol. So next one is nothing but the gamma globulin. gamma globulin जो होता है, मैंने पहले ही बोला कि ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन. तो ग्लोबुलिन का टाइप होता है अल्फा ग्लोबुलिन जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 आएगा आपका, देन बीटा ग्लोबुलिन जिसमें बीटा 1 बीटा 2 आएगा आपका, गामा ग्लोबुलिन. तो गामा ग्लोबुलिन जो होते हैं, सो दैट इज नथिंग बट द एंटीबॉडीज. सो गामा ग्लोबुलिन्स आर नथिंग बट द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईजी. क्या है? आईजी. गामा ग्लोबुलिन्स आर नथिंग बट द इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ए, लाइक दैट. These gamma globulins are the immunoglobulins and they are the binding site for antigen. एंटीबॉडी किसको बाइंड करता है? आपको बाइंड करता है क्या? नहीं. सो एंटीजन को बाइंड करेगा.
So obviously gamma globulins are the binding site for antigen, right? So alpha 1 globulin for transcortin, again बोलता हूँ आपकी क्वेश्चन में आ सकता है आपको, अल्फा 1 ग्लोबुलिन फॉर नोन एज ट्रांसकॉर्टिन, ट्रांसकॉर्टिन क्यों बोलेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बाइंड करेंगे, अल्फा 2 ग्लोबुलिन इज नोन एज सेरुलोप्लाज्मिन, सेरुलोप्लाज्मिन क्यों बोलेंगे क्योंकि क्यूप्रिक आयन बाइंड करता है इसको, एंड लिपिड सोल्यूबल विटामिन बी। देन बीटा 1 ग्लोबुलिन को बोलते हैं ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन क्यों बोलेंगे बिकॉज फेरस आयन बाइंड्स टू बीटा 1 ग्लोबुलिन, बीटा 2 ग्लोबुलिन को बोलते हैं कैरोटिनॉइड, बीटा 2 ग्लोबुलिन को कौन बाइंड करता है, कैरोटिनॉइड्स लाइक प्रोविटामिन ए और कैरोटिनॉइड्स। गामा ग्लोबुलिन को बोलते हैं एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन्स एंड दे आर द साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ एंटीजन। नाउ द ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू। सो ड्रग जो है अगर आपके प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड करता है तो इट्स प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे आपने देखा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एसिटिलग्लाइकोप्रोटीन वगैरह, that is known as a vascular protein. So if drug binds to a plasma protein, that is a vascular protein, because वो plasma protein कहाँ पे है, वेसल में है, और वेसल क्या है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में प्लाज्मा प्रोटीन है, तो उसके लिए उसको बोलेंगे वेस्कुलर बाइंडिंग ऑफ ड्रग। देयर आर ड्रग्स व्हिच आल्सो बाइंड्स टू अदर टिश्यू नोन एज एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू। बी लीवर क्या है, लीवर के ब्लड वेसल में थोड़ी है, लीवर अलग का ऑर्गन है, किडनी कहाँ पे है, किडनी अलग ऑर्गन है, ब्लड वेसल में नहीं है, brain अलग organ है, these organs are known as extravascular tissues. If drug binds to these tissues, they are known as a binding of drug to the extravascular tissue. So extravascular tissue binding of drug. So order of binding of extravascular tissue, सबसे ज्यादा drug किसको bind करते, क्वेश्चन आया था। So order of binding to the extravascular tissue. So most of the drug binds to liver, after that kidney, सबसे पहले ज्यादा ड्रग किसको बाइंड कर देंगे, लीवर को, आफ्टर दैट किडनी, आफ्टर दैट लंग्स, आफ्टर दैट मसल। क्वेश्चन आ चुका था, क्वेश्चन ऐसा आया था जीपैट 21 में, ड्रग्स लिस्ट बाइंड टू, क्या आया था, ड्रग्स लिस्ट बाइंड टू फॉलोइंग एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू। तो उसका मतलब था कि सबसे कम किसको बाइंड करते हैं ड्रग्स, और ऑप्शन में थे लिवर, किडनी, लंग्स, मसल्स। सो सबसे ज्यादा ड्रग जो एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू है वो किसको बाइंड करेंगे, लीवर को, सबसे ज्यादा लीवर को बाइंड करते हैं, उसके बाद किडनी का नंबर है, उसके बाद लंग्स का नंबर आता है, और लास्ट में किसका नंबर आता है, लास्ट में आता है मसल का नंबर। सो सबसे कम ड्रग किसको बाइंड करते हैं, मसल को, क्वेश्चन वही पूछा था। सो इन द सो लिस्ट बाइंड टू फॉलोइंग एक्स्ट्रावेस्कुलर ऑर्गन, सो लिस्ट बाइंड टू मसल्स, और उसमें अगर बोन डाल दिया तो उससे भी ज्यादा कम, सो उसके भी बाद बोन्स का आता है। सो दिस वाज क्वेश्चन इन जीपैट 21। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, अगर प्रोटीन बाइंडिंग होता है ड्रग का तो उसका इफेक्ट क्या होगा। सो प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग अल्टर्स द काइनेटिक्स एज वेल एज डायनामिक्स। प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है ड्रग का, इट विल अल्टर द फार्माकोकाइनेटिक्स एज वेल एज डायनामिक। हाउ इट विल alter the pharmacokinetics, I will explain. So what is the impact of protein binding on the absorption? So absorption will be increased. Absorption क्या होगा प्रोटीन बाइंडिंग का, protein, if drug binds to protein, plasma protein, then what will happen, absorption will be increased। आप बोलेंगे सर कैसे, इसी के लिए तो मैं हूँ। सपोज दिस इज योर मेम्ब्रेन, ये क्या है आपका, सो दिस साइड क्या है, ये साइड पे आपका ड्रग है अवेलेबल, बहुत सारा ड्रग है। सो आफ्टर यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, ये क्या है, ब्लड, इधर क्या है, ब्लड, इधर प्लाज्मा प्रोटीन्स रहेंगे। सो दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग दे विल गो इनटू द ब्लड एंड विल बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। अभी ये जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है, अगर ये ड्रग गया और यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड किया, सो ड्रग इज इन अ बाउंड फॉर्म, सो दिस ड्रग इन द ब्लड इज इन अ बाउंड फॉर्म, सो दिस ड्रग विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ फ्री ड्रग। सो प्लाज्मा क्या बोलेगा कि ड्रग है ही नहीं मेरे पास, तो यहाँ और यहाँ क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा। सो देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड दैट्स व्हाई protein binding of drug increases the absorption. Protein binding of drug increases the absorption. Remember, question आ चुके हैं कि significance क्या है, what is the significance of protein binding? So absorption is increased, right? Now decrease the volume of distribution. जो ज़्यादा प्रोटीन को बाइंड करता है वो कहाँ पे रहेगा, प्लाज्मा में रहेगा, so that's why it has a volume of distribution low. So warfarin, then benzodiazepines, calcium channel blockers, furosemide, benzodiazepines, digoxin, these drugs they extensively bind to a plasma protein। ये ड्रग क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करते हैं एंड उसकी वजह से उनका सभी सब कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे रहता है, सभी लोकलाइजेशन कहाँ पे होता है। सो द अमाउंट ऑफ ड्रग इज लोकलाइज्ड इन द
vascular tissue, मतलब blood vessel में, because they binds to plasma protein. So that's why they have very low volume of distribution. Plasma protein binding of drug increases the duration of action or prolongs the action duration of action. So plasma मैंने जैसे पहले ही बोला है. So if drug is a protein bound, so it is not available for distribution. It is not available for pharmacological action. It is not available for it is not available for elimination. जो प्लाज्मा को प्रोटीन को बाउंड ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो मेटाबोलाइज नहीं हुआ, वो इलिमिनेट नहीं हुआ. सो ऑब्वियसली द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन विल बी लॉन्गर. क्या होगा? ड्यूरेशन एक्शन लॉन्ग होगा. सो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और प्रोलॉन्गेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. सो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, नॉट इफिकेसी ऑफ एक्शन. आप बोलेंगे सर ड्यूरेशन इंक्रीज, ड्यूरेशन मतलब बहुत टाइम लगेगा ना उसको एक्शन दिखाने के लिए, तो ड्यूरेशन इंक्रीज होगा ना. So duration of action is increased. Protein binding of drug decreases the metabolism and elimination. तो metabolism elimination क्या होगा? Decrease होगा. क्यों? Because drug is a protein bound, so it is not available for metabolism as well as elimination. Right? Drug with a low volume of distribution, they are easily dialyzed. अभी drug with a low volume of distribution, they are easily dialyzed. मतलब क्या? जिनका volume of distribution कम है, उसका dialysis easy होता है. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है मतलब क्या है? ये सारा ड्रग कहाँ पे? ब्लड में है. तो ब्लड को ही तो डायलिसिस करना है ना आपको. ड्रग विच आर हैविंग लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर इजीली डायलाइज्ड, एंड ड्रग्स विथ वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, dialysis is not effective. Okay. Now comparison between plasma protein binding of drug and tissue drug binding. तो plasma protein binding में क्या है आपको और tissue binding में देख. Now plasma protein binding of drug involves the very weak bond and thus it is a reversible. Plasma protein binding क्या है? Reversible होता है. Now in the tissue binding generally binding of drug to the extravascular tissue involves a strong bond or covalent bond and it is a irreversible. That's why toxicity. जैसे chloroquine binds to retina and causes retinopathy. Drug that binds to plasma proteins, they have very small apparent volume of distribution. ठीक है, apparent volume of distribution उनका कम रहेगा, वेडी कम रहेगा. Those drug which binds to extravascular tissue will have a large apparent volume of distribution or VD will be high. Half life of plasma protein bound drug is relatively short. कितना देर तक बाइंड रहता है? वो बहुत ही कम टाइम तक रहता है क्योंकि वो रिवर्सिबल है. Half life of extravascular tissue bound drug is very, and most of the time plasma protein binding of drug does not result in toxicity. Most of the time toxicity नहीं होगा आपको. अगर वहाँ पे दूसरा ड्रग है, if another drug is there which will displace the already bound drug, so in that condition you may suffer from toxicity. So drug does not result in the toxicity most of the time. Plasma protein bound drug, extravascular tissue bound drug result in the toxicity. Displacement type of, where displacement from the binding site is possible by another drug. अगर जैसे वारफेरिन जो है, so warfarin bind करता है albumin को, warfarin will bind to warfarin will bind to albumin, and at the same site 1 your phenylbutazone also binds and displaces the warfarin from the binding site, and there is a sudden rise of free drug in the plasma. क्या होता है कि जहाँ पे वारफेरिन जाके बाइंड करता है तो वहाँ पे आपका फिनाइलब्यूटाजोन भी जाके बाइंड करता है, और फिनाइलब्यूटाजोन वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांगली जाके बाइंड करता है, उसको वारफेरिन को वहाँ से निकाल देता है. वारफेरिन का फ्री ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में एक ही टाइम पे निकल के आता है, एंड दैट्स व्हाई दैट कैन रिजल्ट इन द ब्लीडिंग. एंटीकोगुलेंट है ना, तो ब्लीडिंग हो जाएगा. सो डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज पॉसिबल. In case of tissue binding of drug, displacement type of interaction, they are rarely occur, does not occur. Now, competition between two drugs for binding to a plasma protein, that can occur. So competitive binding हो सकता है. In case of tissue binding of drug, there is no competitive. यहाँ पे बहुत कम ड्रग रहते हैं जो particular drug tissue को bind करते हैं. Now this was about the